Hello students, in last class we were doing defects in solids and we have completed stochiometric defect and impurity defect. Today we'll go for non-stochiometric defect. Non-stochiometric defect. Okay. As we know, non-stochiometry means the stoichiometry of the compound will not maintain it after this defect. What does it mean? For example, zinc oxide. The crystal is of zinc oxide. Now, earlier the stoichiometry is 1:1. The ratio of cation and anion is 1:1. And after defect, the ratio changes. It becomes either 1.2 zinc 1.20, like here the ratio is 1:1, but here the ratio is 1:1.2:1. And what does it mean? The ratio of cation and anion changes after the defect. Then it is known as non-stoichiometric defect. पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें we have discussed this thing. Again, I am reminding you. So, non-stoichiometric defect means the cation-anion ratio is not same. Now, if the cation-anion ratio is not same, then there are two possibilities. Either there will be metal excess or there will be metal deficiency. या तो मेटल ज्यादा होगा या फिर मेटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, कैटायन अनायन का रेशियो सेम नहीं रहेगा, मेटल और नॉन मेटल आयन सेम नहीं रहेगा, तो क्या होगा, या तो मेटल ज्यादा होगा या तो मेटल कम होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंसीडर मेटल एक्सेस. कैसे कैसे मेटल एक्सेस हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेटल एक्सेस होने की, विल टॉक अबाउट दैट. तो मेटल एक्सेस जो है इट कैन टेक्स प्लेस इन टू वेज. दो तरह से ये हो सकता है मेटल एक्सेस. कैसे कैसे? नंबर वन इज due to anion or anionic vacancy, and second one is due to the presence of extra cation in the interstitial site. दो तरह से मेटल एक्सेस हो सकता है. ड्यू टू अनायन वैकेंसी, अपने पास एक आयनिक सॉलिड है और उसमें अनायन अपनी जगह पे हो ही नहीं, तो अनायन अपनी जगह पे होगा ही नहीं तो मेटल अपने आप ज्यादा हो जाएगा. तो मेटल एक्सेस ड्यू टू अनायन वैकेंसी. सेकेंड वन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन और एक्स्ट्रा मेटल आयन इन द इंटरस्टिशियल साइट. जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें एक्स्ट्रा मेटल आयन हो तो अपने आप क्या हो जाएगा, कैटायन एक्सेस हो जाएगा. सो विल डील विद बोथ वन बाय वन. So first of all, we'll talk about metal excess due to anionic vacancy. Metal excess due to anionic vacancy. We'll discuss this with the help of one example. For example, NaCl. We'll take example of NaCl. This is Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, Na plus when this sodium chloride is heated in sodium vapors. जब इस सोडियम क्लोराइड को अपन सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं या फिर लिथियम क्लोराइड को लिथियम वेपर्स में हीट करते हैं या फिर पोटेशियम क्लोराइड को अपन पोटेशियम वेपर्स में हीट करते हैं. What does it mean? When any alkali metal halide is heated in metal vapors, then some anionic vacancies are generated. तो ये क्लोराइड आयन जो है इस क्रिस्टल से बाहर आ जाएगा.
टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अब क्लोराइड बाहर आया तो क्रिस्टल कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, one electron is trapped in this anionic site. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां ट्रैप कर लिया जाएगा, इस अनायनिक साइट में ट्रैप कर लिया जाएगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. एंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड anionic sites are known as F center. This is very important question. बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है what is F center. So how can we define it? The electron trapped anionic sites are known as F center. This F word is taken from a word, F letter जो है it is taken from a word Farben-Center. कहां से लिया है, ये वर्ड से लिया है, इट इज Farben-Center, which means color imparting, which means color imparting. और इस F center की वजह से this NaCl, the whole crystal becomes yellow in color. कैसा हो जाएगा, कलर में येलो हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, because it is color imparting center, it is F center. So due to the presence of this electron, this crystal acquires color. So this is known as F center. And due to this defect, due to metal excess defect, sodium chloride becomes yellowish in color, lithium chloride becomes pink in color, and potassium chloride becomes violet in color. So these crystals acquire colors after this defect, metal excess defect, due to anionic vacancies. This is very, very important. जनरली बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी है व्हाट इज द कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड, व्हाट इज द कलर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आफ्टर डिफेक्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ सोडियम क्लोराइड आफ्टर डिफेक्ट. सो इट बिकम्स येलोइश, इट बिकम्स पिंक, इट बिकम्स वायलेट. ठीक है, जनरली क्वेश्चन ये भी पूछा गया है व्हाट इज एफ सेंटर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड अनायनिक साइट्स आर नोन एज एफ सेंटर्स. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में अपन ने फर्स्ट कैटेगरी लिया मेटल एक्सेस. मेटल एक्सेस के अंदर अपन ने वापस से फर्स्ट कैटेगरी लिया कि मेटल एक्सेस ड्यू टू अनायनिक वेकेंसी. ये मेटल एक्सेस क्यों हुआ है, क्योंकि अनायन अपनी जगह पे नहीं है. और ये कब होता है, when any alkali metal halide is heated in its vapors. For example, when NaCl is heated in its vapors, then some anionic sites are anionic vacant sites are generated which are trapped by electrons. So this is about metal excess due to anionic vacancy. The second case is metal excess due to the presence of extra metal ions in interstitial site. So for this, we'll take example of zinc oxide. We'll take a crystal of zinc oxide. ये लिया अपन ने जिंक ऑक्साइड, Zn+2 O-2, Zn+2 O-2. Alternately, we write Zn+2 O-2. Zn+2 O-2. So when zinc oxide is heated, जब अपन जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट करते हैं, then it will break up to give Zn+2 plus half O2 plus 2 electrons. Now these ions occupy interstitial sites. ये जो एक्स्ट्रा मेटल आयन है ये कहाँ आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं. इंटरस्टिशियल साइट में आते ही ये डिफेक्ट कैसा हो गया, डिफेक्ट हो गया. एक्स्ट्रा आयन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, लेकिन क्या ज्यादा हो गया, मेटल जो है वो क्या हो गई, एक्सेस हो गई. So this is an example of metal excess. Now, अब जब metal ion interstitial site में आ गया तो the crystal becomes charged. Crystal वापस से charged हो गया और crystals तो charged हो नहीं सकते. That's why these two electrons
ऑक्यूपाई नेबरिंग साइट्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेबरिंग साइट्स में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं नेबरिंग साइट्स में? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आल्सो प्रोवाइड कलर टू दिस क्रिस्टल्स, और वी कैन से जिंक ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग बिकम्स येलो इन कलर। जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो कलर में कैसा हो जाता है? येलो। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, गिव रीजन जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, या why zinc oxide turns yellow in heating. So the answer lies behind this. So this is metal excess due to the presence of extra metal ions in interstitial site. पहले वाले केस में मेटल एक्सेस क्यों हुआ था? क्योंकि नॉन मेटल अपनी जगह पे नहीं था। नॉन मेटल का जो आयन था उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी थी, इसलिए मेटल ज्यादा हो गया था। यहाँ पे मेटल एक्सेस क्यों हुआ है? क्योंकि एक्स्ट्रा मेटल आयंस जो हैं उन्होंने इंटरस्टिशियल साइट्स जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? मेटल एक्सेस हो गया। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ मेटल एक्सेस। One is metal excess due to anionic vacancy, and second one is metal excess due to the presence of extra metal ions in the interstitial site. Now, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बताया था तो वहां पे जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया था। अब पहले डिफेक्ट के पहले इसका फॉर्मूला क्या था? Zn। क्या था? ZnO, यानी जिंक एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन विच रेशियो? 1:1 रेशियो। लेकिन अब जो है द स्टोकियोमेट्री गेट डिस्टर्ब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट मे बी 1.1, इट मे बी 1.2, इट मींस द रेशियो चेंजेस। ठीक है, दैट इज नॉट फिक्स्ड बट द रेशियो चेंजेस। जो पहले जो स्टोकियोमेट्री था, पहले जो इसका रेशियो था, वो क्या हो गया? टोटली चेंज हो गया। सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। किस कैटेगरी में आ गया ये? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में आ गया। गॉट इट? ओके। Now next one is metal deficiency. Non-stoichiometry defect में अपन ने दो कैटेगरीज किया, metal excess, metal deficiency. Metal excess में दो कैटेगरी किया, metal excess due to the presence of extra metal ions in the interstitial site and metal excess due to anionic vacancy. Now we'll go for metal deficiency. अब अपन बात करेंगे किसका? metal deficiency. Next we'll go for metal deficiency. Now, नाम से पता चल रहा है कि मेटल आयंस जो हैं, कटायंस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो लेट अस सी कैसे कम होंगे। We'll take one example, Fe. So it is Fe plus 2, this is O minus 2, Fe plus 2, O minus 2, Fe plus 2, O minus 2, Fe plus 2. Now, first thing about this defect is, this defect is present in those ionic solids where metal atom or metal ion causes variable oxidation states. ये defect उन आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होगा जहां पे कि मेटल आयन जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फॉर एग्जांपल, यू जनरली नो कि आयरन शोज +2 एज वेल एज +3। +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो आयरन शो करता है। एंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस डिफेक्ट इज कि हियर इन दिस डिफेक्ट्स मेटल आयन फॉर्म्स और शोज this defect is found in those ionic solids where metal cations shows variable oxidation states. So let us see. अब अपन मान लें कि यहाँ पे एक आयरन जो है +2 से +3 हो गए, कुछ आयरन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गए, +2 से क्या हो गए? +3, क्योंकि आयरन के अंदर टेंडेंसी है दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। इट कैन शो +2, इट कैन शो +3। तो दो आयरन जो है वो +2 से कौन सी कंडीशन में आ गए? +3 कंडीशन में जो है आ गए। अब अगेन द क्रिस्टल बिकम्स चार्ज। क्रिस्टल क्या हो गया? चार्ज हो गया। सो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एक आयरन जो है यहां से मिस हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? होल। मेटल अपनी जगह से मिस हो गया तो मेटल डेफिशिएंसी हो गई और डिफेक्ट अराइज हो गया। सो दिस इज अबाउट मेटल डेफिशिएंसी। ये क्या हो जाएगा? मेटल डेफिशिएंसी। सो फर्स्ट थिंग इज दिस डिफेक्ट इज प्रेजेंट वेयर द मेटल
in those ionic solids where the cation shows variable oxidation states. So यहाँ पे अपन ने कर दिया और एक एक का ऑक्सीडाइज होने में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया. So to maintain the electrical neutrality, one iron get mixed from the crystal lattice, leaving behind hole. So metal कम हो गया, तो this is known as metal deficiency. अब मेटल एक्सेस वाले केस में अपन ने क्या देखा था, जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल लिया था. वहां फॉर्मूला क्या हो गया था, जिंक 1.2O. यहाँ पे पहले अगले का फॉर्मूला वाज FeO. Now after that it becomes Fe.96O or Fe.98O. What does it mean? The stochiometry again get disturbed. वापस से जो इसका रेशियो था, इसकी जो स्टोकियोमेट्री थी वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, चेंज हो गई. So this is a type of non-stochiometric defect. So let us revise. Non-stochiometric defect कितने टाइप का होगा, 2 टाइप्स. कौन कौन से, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी. मेटल एक्सेस कितने तरह से होगी, अगेन 2 टाइप्स, ड्यू टू द presence of anionic vacancies or due to the presence of extra metal ions in the interstitial site. And metal deficiency में there is only one possibility. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताती हूँ. एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, सो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दैट. क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक आयरन ऑक्साइड है विच हैज फॉर्मूला दिस Fe.96O. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 आयंस, कि कितना फ्रैक्शन में Fe+2 है और कितना फ्रैक्शन में Fe+3 आयंस जो है इस आयनिक सॉलिड में आफ्टर डिफेक्ट प्रेजेंट है. तो अपन क्या करेंगे, लेट Fe+3 कितना माना अपन ने, x. तो Fe+2 क्या मानेंगे, टोटल कितना है 0.96, तो 0.96 माइनस x. Fe+3 को क्या कंसिडर कर लिया, x, और Fe+2 कितना हो गया, टोटल इज 0.96 और 0.96 में Fe+2 भी है, Fe+3 भी है, तो Fe+3 जो है x हो गया, तो Fe+2 क्या हो जाएगा 0.96 माइनस x. Now we know total positive charge plus total negative charge equals to 0. तो Fe+3 कितने हैं, x हैं. चार्ज कितना होगा, एक Fe पे +3 है, तो x Fe पे क्या हो जाएगा 3x. Fe+2 पे चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2 into 0.96 माइनस x. और एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, ऑक्सीजन इज 1 है, -2 इक्वल्स टू 0. सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को. सॉल्व करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा Fe+3 और जो Fe+3 की जो x की वैल्यू आ गई उसको 0.96 में से माइनस कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा Fe+2. ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन इन एक्सरसाइज दैट आई हैव टोल्ड यू. नेक्स्ट इज, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जैसे जनरली जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैंने आपको बताया है, फिर भी एक बार वापस से डिस्कस कर लें. स्टार्टिंग में पूछा जाता है कि विच डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड. ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो किसी भी सॉलिड की डेंसिटी को डिक्रीज करता है. तो जनरली अपने माइंड में क्या स्ट्राइक करता है, सीधा सा वैकेंसी. लेकिन वैकेंसी इज नॉट एप्रोप्रिएट आंसर. राइट शॉर्टकी फॉर दिस. व्हाई, बिकॉज वैकेंसी जो है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल में भी तो वैकेंसी है, लेकिन वहां डेंसिटी डिक्रीज नहीं हो रही. तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर इज शॉर्टकी. नेक्स्ट इज, which defect increases the density of solid? Then it is interstitial defect. Next is, why alkali metal halides will not show Frankel defect? Why? Because the sizes of alkali metal cations is large enough to fit into the interstitial site. उनका साइज बड़ा होता है, इसलिए वो इंटरस्टिशियल साइट में फिट नहीं होते हैं, इसलिए alkali metal halides जो है वो Frankel defect शो नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज, why zinc oxide turns yellow in color? तो आप बताएंगे उसमें कि metal excess defect होता है due to the presence of extra metal ions in the interstitial site. Next is, जो मैंने आपको impurity defect में पूछा था, कई बार पूछा गया, what happens when this strontium chloride is mixed in NaCl, या what happens when cadmium chloride is mixed in AgCl. So these are few questions which are generally asked in board exams. तो आप उन सबको कर लें डिस्कस. And this is all about the defects. अच्छे से पढ़ें, and कोई प्रॉब्लम हो आपको तो talk to me and learn all the topics. Thank you.